Good evening, सबको नमस्ते, pranam. Hope you all will be doing great. Thank you for joining. Because ये Lionsgate portal है, so I would request if you can join just before time, before 8 p.m. so that we can start sharp at 8 and we can get the benefit of Lionsgate portal energy. Yesterday, we have worked upon our wealth and abundance. आज हम एक बहुत ही precious wealth की बात करने वाले हैं, जो है health. कि आप सब मेरे से agree करते हैं, the health is the most precious wealth in our life. If we are healthy, then only our mind is healthy. If our mind is healthy, then only our soul is at peace. So अगर हम बात करें कि why we have challenges. Namaste, good evening, and welcome. So we were just talking about the most precious wealth is our health. So आज हम health की बात करेंगे. And as you know, if there is a very beautiful affirmation cards from Mystica Muse, designed by there are 5 categories in the pack. See, this is the pack. There are 5 categories और उसमें से ही हम एक एक करके हर रोज आपके साथ वो affirmation करा रहे हैं with the meditation. क्योंकि every card has the connected meditation. How you apply those affirmation in your life. Why? Because जब हम ऐसे ही बोलते हैं, that doesn't give any impact on our mind and body. आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप affirmation कर रहे होते हैं तो ठीक है, for a moment आपको लगता है कि yes, you affirm. Affirmation is what? The repeating sentence you are saying to yourself. You know, एक self talk हम कर रहे हैं through affirmation. But जब हम उसको meditation के साथ connect कर देते हैं, that means we are working on our subconscious brain. हम deep कहीं subconscious brain में वो affirmations को डाल रहे हैं, जिससे कि हम बार बार जब हम unknowingly या knowingly कुछ गलत भी कहें, तब भी हमारा mind हमको करेक्ट करे या चेक करे. So आज की affirmation है, क्योंकि आज का पोर्टल है हेल्थ के साथ कनेक्टेड. हम Lionsgate पोर्टल पे हैं. We are working 26 से till 8th of August और आज today is the 1st of August और आज हम बात करेंगे हेल्थ affirmation की. एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, then we'll do it during the session. I am calm, centered and deeply connected to the infinite source of healing within me. So where we have to work, as we have started, काम हमें अपने ऊपर करना है. We are not here to change others. We are here to
work upon us to transform us. अगर आप मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हैं, प्लीज शेयर योर रिस्पॉन्स. आई वुड लव, अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, there are so many things you can share your thumbs up, you can send me hearts so that के मुझे लगे कि yes, I am talking to my people. I'm still waiting. I didn't receive. All right. So अब हम आगे चलते हैं. Now the time is thank you. Thank you so much. So now we'll move forward. हम बात करते हैं health की, why we are facing challenges in our body. क्या है वो challenges? उनको हम एक meditation के थ्रू, क्योंकि ये जो टाइम है 8 बजे से 8 मिनट तक, this is the 8 energy, the infinite energy. And 8 energy क्या है? As we have discussed in our previous sessions, the one circle denotes the material world, the another circle denotes the spiritual world, and जहाँ ये दोनों मिलते हैं, that is our consciousness. And through our meditations, through our affirmations, we are connecting our consciousness to the cosmic consciousness, which is the higher self. Imagine करके देखिए, जब ऐसा हो जाएगा, I can give you, I would not say guarantee. Why? Because it all depends on you. But you can write it down somewhere. आज की डेट डाल के कि ये मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करते हैं, उसको अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देन कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है एंड यू कैन नॉट अचीव. And today is a beautiful day where we can work upon our health challenges, चाहे जो भी हो, whether it is because of the stress we are taking, चाहे वो we feel fatigue, sometimes we feel anxiety क्यों? Because कहीं ना कहीं there is a fear, deep rooted fear in our body, इसलिए एंजाइटी हम फील करते हैं. सो हमें क्या विजुलाइज करना है? स्टार्ट करते हैं हम आज की अफर्मेशन. यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन and breathe out. When you breathe out, just relax your shoulder, spine straight. Once again, breathe in, peace, and breathe out, discomfort. Breathe in, calm, and breathe out, agitation. Now visualize yourself. You're standing near a magnificent tree. एक बहुत सुंदर वृक्ष है और आप उसके पास खड़े हैं. And now you become that tree. आप वो वृक्ष बन जाते हैं. अपने आप को एक हेल्दी ट्री में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखें. आपके पैरों के नीचे से very strong roots are growing and going towards Mother Earth, the deepest point. धरती माँ के अंदर आपके पैरों के नीचे से वो जड़ें जा रही हैं.
मदर अर्थ से एमरल्ड ग्रीन कलर में लाइट एनर्जी को अपनी बॉडी में एंटर करते हुए देखें, अपने पैरों में आते हुए देखें, अपने रूट चक्रा पर आते हुए देखें। हारा चक्रा जो कि नाभि से 2.5 उंगल नीचे होता है, मणिपुर चक्रा जो कि नाभि से 2.5 उंगल ऊपर है, वहां आते हुए देखें। एंड अपने हार्ट के अनाहत चक्रा के सेंटर में आते हुए देखें। फील करें मदर अर्थ की calming, peaceful, nurturing एनर्जी को अपने हार्ट को फिल होते हुए देखें। पीस से अपनी बॉडी को रिलैक्स होते हुए देखें। Take a moment to absorb that energy जो आपको भर रही है एक असीम शांति से, जो आपके अंदर भर रही है एक उत्साह, जो आपके हृदय को भर रही है कंपैशन से, जॉय से, लाफ्टर से। As you feel calm and peace, now say this to your mind. Divine energy calming my each and every cell of each and every muscle, organ, and aligning my all chakras with higher consciousness. Now visualize there is a beautiful white golden light descending on your head from the above, calming your brain, your eyes, your ears, your throat, your heart, your lungs, your liver, your gut, your kidneys, your pancreas, your gallbladder, your legs, and your feet. Once you feel there is an immense peace
within your heart, in your mind, and in your body. Now very gently keep your left hand at your heart center and right on top of that. And now affirm with me, I am calm, I am centered, each and every cell in my body is filled with energy. I have an intelligent body and mind. I am grateful to the divine for blessing me a healthy body, an intelligent mind, and a heart with full of compassion. Now take a deep breath. Fill yourself with that divine energy and breathe out, which no longer serves you. Now say to the divine your gratitude prayer for blessing me and my family, a healthy body, healthy mind. Gratitude. Thank you. Thank you. Now slowly you can open your eyes. I thank you this platform and each one of you on this journey. Tomorrow we'll have another abundance meditation. Till then, have a good night and a peaceful night to each and every one of you. Thank you. Thank you.